Am I audible to everyone? Sure. So I hope everyone got an idea how to do the problems related to the resistance and as well as a few series combination. Next part chalte hain beta aaj. So today is your 5th July. चलिए कल कहाँ तक किए थे बेटा अपन किरचॉफ लॉस वगैरह खत्म कर लिए थे क्यूब रेसिस्टेंस वगैरह भी खत्म कर लिए थे वेस्टर्न ब्रिज वगैरह भी खत्म कर लिए थे लेट अस ट्राई टू गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वन इंपॉर्टेंट एरिया है बेटा आज खत्म कर लेते हैं दैट इज अबाउट योर जोल्स हीटिंग इफेक्ट जोल्स हीटिंग इफेक्ट ठीक है थर्मल प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं बेटा इंपॉर्टेंट एरिया है रेगुलरली इस पे भी क्वेश्चन बनता है बेसिकली अगर अपने पास देखो कांस्टेंट करंट बन रहा है let me just change the font size फर्स्ट कंडीशन में देखो बेटा अगर हम लोग कांस्टेंट करंट ले रहे हैं कांस्टेंट करंट के बारे में बात करें तो जब भी कोई भी वायर में अगर कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है जैसे मान के चलो एक रेजिस्टेंस है इस तरह से एक पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल इसमें से फ्लो हो रहा है करंट मान के चलो सम आई एम्पियर और इसका रेजिस्टेंस है आर और यहाँ से यहाँ तक का इसका पोटेंशियल हो जाएगा वी वोल्ट ठीक है ना इसके अंदर पावर जो होगा ना सो पावर इज इक्वल टू याद है आप लोग को आई स्क्वायर इंटू योर आर अगर करंट कांस्टेंट रहा तो सो अगर इसको हम लोग पोटेंशियल में भी लिख सकते हैं ओम्स लॉ के हिसाब से आई इज इक्वल टू व्हाट आई कैन राइट बेटा वी स्क्वायर बाय योर आर स्क्वायर into your r तो ये r ये स्क्वायर चलेगा so this will be also be equal to v square divided by your r या इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं v into your I because v is equal समझ बेटा v is equal to what I can write here v into this one is nothing but of your v divided by your r so v by your r can be written as I is equals to v by r that is nothing but of your v into your I so these are the different forms of your power जो अपने को याद रखना है P is equals to your I square into your R R it is V square by R R P is equals to V into your I इसकी यूनिट क्या होती है बेटा याद है किसी को वॉट यूनिट होती है अपने पास वॉट और इसमें जो हीट जनरेट होती है हीट जनरेटेड इज गिवन बाय द फॉर्मूला H is equals to your I square R into your T yeah that can be also written as of your v square I is equals to v square by r square में से r चले जाएगा यहाँ पर तो ये क्या r बचेगा into your t या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं v into I into your t भी लिख सकता हूँ because v square को v into v लिख लीजिए बेटा isn't it v by r is nothing but I so these are the different forms of your heat H is equals to I square r into t or H is equals to v square by r into t or H is equals to v into I into your t part definition और इसकी यूनिट होती है बेसिकली जॉल्स इसकी यूनिट होती है कितना जॉल्स इसकी यूनिट होती है जॉल्स ठीक है ना ले रहे हैं चलिए नेक्स्ट वन अगर हम लोग नेक्स्ट पार्ट बात कर रहे हैं अगर टाइम वेरिंग करंट है टाइम वेरिंग करंट है यानी करंट कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है तो वैसे वाले सिचुएशन में क्या फॉर्मूलेस यूज करते हैं अपन हीट के अंदर बेसिकली आई होप यू माइट हैव बीन रिमेंबर सो सेम रिलेशन ये हो गया मेरे पास है रेसिस्टर और ये हो गया रेसिस्टर ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल और यहाँ से यहाँ तक इसका पोटेंशियल रहेगा और इसमें जो करंट आ रहा है ना करंट इज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो एट दैट टाइम वी यूज द इंटीग्रेशन H is equals to your integral of your I square R into your dt
ठीक है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन, और लिमिट विल बी फ्रॉम योर T1 टू योर T2, isn't it? और उसी तरह से पावर लिख रहे हैं अगर, सो एवरेज पावर विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ योर I स्क्वायर R इंटू योर dt divided by your integral of your dt, integral of your dt, isn't it? So मान के चलो एग्जाम्पल करंट कैसा देगा, करंट एज ए फंक्शन ऑफ योर टाइम, मतलब मैंने स्टार्टिंग में बोला था I इज इक्वल्स टू I नॉट इंटू साइन ओमेगा टी दे देना, या कॉस ओमेगा टी दे देना, या 2 3 टी स्क्वायर टी क्यूब कुछ दे देना, ऐसे वाले दे दिया तो ये वाले फॉर्मूले यूज कर लीजिए, ठीक है ना बेटा। जनरल फॉर्मुलेस एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस बेटा, पी एवरेज इज इक्वल्स टू योर दिस वन एंड हीट के फॉर्मुलेस, बेसिकली इस पे भी प्रॉब्लम्स बनते हैं बेसिकली, तो थोड़ा बहुत इस पे ध्यान दीजिए, दिस आर द डिफरेंट फॉर्म्स। उसके बाद अपन बात करते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, याद होगा सभी को, याद है? एक मान के चलो मेरे पास वेरिएबल रेसिस्टर है, ये हो गया, ऐसा अगर डालूं तो ये वेरिएबल रेसिस्टर हो जाएगा, इसको मैंने एक पोटेंशियल से कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल, और ये इसका इंटरनल रेसिस्टेंस यहाँ पर, दिस इज स्मॉलर, और इसका ईएमएफ हो गया यहाँ पर मान के चलिए ई। तो देखिए बेटा, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस दिस कैपिटल आर मस्ट बी इक्वल टू द इंटरनल रेसिस्टेंस, कंडीशन यही है, बस इतना याद रख लीजिए आप लोग, कैपिटल आर मस्ट बी इक्वल टू योर स्मॉलर, कैपिटल आर मस्ट बी इक्वल टू स्मॉलर। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है इस पे, तो बी लिटिल बिट केयरफुल रिलेटेड टू दिस वन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वन इज पावर रेटिंग। पावर रेटिंग के क्वेश्चंस कैसा करना, देखो मान के चलिए मेरे पास ऐसा कुछ बल्ब है, ठीक है, एक बल्ब है, इसलिए मान के चलिए इसका पोटेंशियल है 220 वोल्ट और 50 वॉट इसका पावर है। 220 वोल्ट क्या होता है बेटा, दिस वन इज योर रेटेड वोल्टेज, दिस इज योर रेटेड वोल्टेज, एंड दिस वन इज राइट नाउ फॉर मी रेटेड पावर। उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है, जैसे आप बल्ब खरीदने जाते हो तो इसको लिखा हुआ था ना 60 वॉट बल्ब, ऐसा कुछ बेसिकली। तो रेटेड का मतलब क्या होता है, इट मींस द बल्ब विल कंज्यूम 50 वॉट ऑफ ए पावर इफ 220 वोल्ट इज बीन connected across it. It means bulb will consume, कितना कंज्यूम करेगा बेटा, bulb will consume 50 watt if 220 volt is across it, यानी इतना पोटेंशियल अगर आप लगाओगे तो बल्ब कितना पावर यूज करेगा, 50 पावर यूज करेगा। तो इसमें रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब निकालने का फॉर्मूला होता है बहुत फेमस, रेसिस्टेंस ऑफ योर बल्ब is equals to your V square divided by your power P, or that is equals to your 220 whole square divided by power. Power is nothing but यहाँ पर कितना लिया मैंने 50, तो कितना बन जाएगा 220 divided by 50 approximately 968 ohms बनेगा, that will be the resistance of the bulb, isn't it? यानी कंडीशन देखो बेटा, अगर अपना अप्लाइड पोटेंशियल जो है ना 220 वोल्ट से अगर ज्यादा है, बल्ब विल गेट फ्यूज। If V is greater than 220 volt is across your bulb, okay, it will fuse, क्योंकि इसका मैक्सिमम कैपेसिटी 220 है, अगर अपना पोटेंशियल से ज्यादा है तो वो फ्यूज कर जाएगा बेसिकली, यानी मोर पावर मींस मोर ब्राइटनेस, याद रख लीजिए, मोर पावर that means more brightness, क्लियर है? इतना तक याद रख लीजिए फॉर डूइंग द न्यूमेरिकल्स, दैट्स मोर देन इनफ फॉर डू द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस वन। किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक किसी को? R is variable resistor and small r is internal resistance बेटा, small r is internal resistance, इसके अंदर जो small r है ना, ये small r is your internal resistance of the cell, internal resistance, ठीक है ना। ये capital R is your variable resistance,
यानी रेसिस्टेंस विच चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू योर टाइम। ठीक है ना बेटा, चलिए क्लियर। सो पावर रेटिंग क्या है, ऐसे वाले कंडीशन आ जाएंगे, मैं थोड़े बहुत आप लोगों को प्रॉब्लम्स करवा दूंगा। तो नेक्स्ट साइड रीडिंग देख लीजिए, विल बी टॉकिंग अबाउट योर गैल्वेनोमीटर to ammeter and voltmeter, बहुत फेमस फॉर्मूले से गैलोनोमीटर से लेके एमीटर को कन्वर्ट करना और एमीटर और गैलोनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना। तो फर्स्ट वन इज, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एमीटर, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज टू द सर्किट। बेटा ये पैरेलल में वर्क नहीं करेगा, ये याद रख लीजिए। ओके, you should always be connected in series, should always be connected in series for the given circuit। and ideal ammeter का resistance कितना होता है, 0। ideal ammeter has 0 resistance, has कितना resistance, 0 resistance। practically it has very low resistance actually देखा गया तो यहाँ पर देखो, अगर ये resistance है मेरे पास, तो इसके पैरेलल में अपने को अमीटर होता है इस तरह से। दिस इज कनेक्टेड टू योर बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ऐसा कुछ पोटेंशियल कनेक्ट हुआ। दिस इज योर वी, दिस इज योर कैपिटल आर, ये अमीटर, और इसमें हो गया करंट ऑफ योर आई एम्पियर्स। ठीक है ना, इतना याद रख लीजिए। नाउ हाउ डू यू कन्वर्ट बेटा, कन्वर्शन में याद है किसी को? सो प्लीज डू प्रॉब्लम्स ऑन द लूप लॉ, कैन नॉट गेट कंफ्यूज्ड ऑन इट। ओके, आई विल डू सम प्रॉब्लम्स बेटा, थोड़े एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स में करवा देता हूँ। ठीक है ना। सो कन्वर्शन में देखो बेटा, अपन क्या करते हैं, ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, ये गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वी कनेक्ट ए स्मॉल रेसिस्टेंस इन पैरेलल, वी कनेक्ट ए स्मॉल रेसिस्टेंस इन पैरेलल, इसको अपन बोलते हैं शंट। इसमें से करंट जाएगा आई, इसमें से जो करंट जाएगा दैट इज अ करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, इसमें से जो करंट जाएगा दैट इज अ करंट थ्रू द शंट। ठीक है ना, इज इट क्लियर? Isn't it? IS मतलब कितना बेटा, IS will be equal to current through the shunt is equals to I minus of your IG भी बोल सकते। अब ये दोनों पैरेलल में बेटा, G and S are in parallel, that means IG into your capital G will be equal to your I minus of your IG into your S, ऐसा भी लिख सकते हैं, isn't it? So I can calculate the current right now in this one. So current will be equal to your how much value? I will be equal to your current through galvanometer into 1 plus G divided by your S. So this will be the current correlation. So simplify किया मैंने, IG के टर्म्स पूरे एक जगह लेके गए, माइनस हो गया ना तो प्लस आ जाएगा बेसिकली। क्लियर है? ये शंट का जो रेसिस्टेंस है ना बेटा, दिस शंट रेसिस्टेंस विल बी much lesser than of your galvanometer, and IG is your maximum current that passes through the galvanometer beta, first full scale deflection. So IG is maximum current, IG is कितना बेटा, maximum current that can pass through galvanometer for full scale deflection, for full scale deflection। full scale deflection करंट मतलब क्या करंट लोगे आप, कभी भी IG को ले लेना, इतना याद रख लीजिए, that's more than enough for। ठीक है ना, any doubt इसके अंदर? What is S? S is a shunt beta, S is your small resistance called as shunt, ठीक है, is it clear? A small resistance connected in parallel to the galvanometer, ये पूरा इंस्ट्रूमेंट है ना, अब ये जो पूरा इंस्ट्रूमेंट है, ये पूरा इंस्ट्रूमेंट is called as of your ammeter, this is called as of your ammeter। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वन, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर देखो बेटा, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, इट विल नेवर कनेक्ट इन सीरीज, कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्टामीटर शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक पॉइंट याद रख लीजिए इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, आइडियल वोल्टामीटर हैज इनफाइनाइट रेसिस्टेंस। आइडियल वोल्टमीटर जो मिलता है अपने को, आइडियल वोल्टमीटर हैज
इनफाइनाइट रेसिस्टेंस, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस ऐसे पॉइंट्स है जो अपने को एवरी टाइम दिमाग में लेके चलना है फॉर डूइंग न्यूमेरिकल्स बेटा। प्रैक्टिकली वेरी हाई रेसिस्टेंस होता है, फिर इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं अपन, इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस में एक वेरी हाई रेसिस्टेंस इज बीन कनेक्टेड इन पैरेलल, दिस इज नोन एज ऑफ योर आर। ठीक है, ये पूरा इंस्ट्रूमेंट जो होता है बेसिकली, अभी ये पूरा जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसको हम लोग गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, सर वोल्ट मीटर बोलते हैं। A very high resistance connected in connected in series with a galvanometer will convert a moving coil galvanometer into your voltmeter. ये जो कैपिलर है, this one is your very high resistance, very high resistance connected in series combination. Ammeter में very small resistance connected in parallel. इसमें जो करंट जाएगा that is a galvanometer करंट ही जाएगा ना बेटा, IG। तो यहाँ पर पोटेंशियल लिख सकते हैं हम लोग, V is equals to your IG into, ये दोनों सेम रेसिस्टेंस है तो इट इज कैपिटल R प्लस ऑफ योर G, isn't it? So IG is nothing but what, galvanometer current for full scale deflection. IG is your full scale deflection current, full scale deflection current। कभी ये वर्ड यूज कर दिया full scale deflection current, मतलब क्या हो गया कभी भी, IG current passing through the galvanometer। क्लियर है? इतना फॉर्मूला अपने को याद रखना है फॉर डूइंग द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस वन। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस वन। क्लियर है? चलो, एंड लास्ट वन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है बेटा, एक तो होता है मीटर ब्रिज, अनदर वन इज राइट नाउ फॉर मी योर पोटेंशियोमीटर ब्रिज। चलो, नेक्स्ट वन इज मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज ही है बेटा। बस अपने को याद रखना है इसमें कि इसमें पास दिस इज एक्चुअली यूज्ड टू फाइंड व्हाट, रेसिस्टेंस ऑफ योर अननोन, अननोन रेसिस्टेंस को फाइंड करने के लिए यूज होता है। दिस इज द बेसिक रिलेशन व्हिच यू नीड टू रिमेंबर। Based on Kirchhoff, it is used to find unknown resistance. Okay, it is used to find what for me, unknown resistance. ये एक्चुअली एक ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा, यहाँ पर एक वायर होता है, एक 1 मीटर का या मे बी 2 मीटर का, दिस इज 1 मीटर वायर। टू दिस वन वी आर कनेक्टिंग, यहाँ पर एक गैप होता है ऐसा, यहाँ पर एक गैप होता है, फिर यहाँ पर एक गैप होता है, फिर यहाँ पर एक गैप, ऐसा कुछ, और यहाँ पर अपन एक रेसिस्टेंस कनेक्ट करते हैं इसके अंदर। सो देयर इज वन स्मॉल रेसिस्टेंस हियर राइट, मान के चलो दिस वन इज योर R1, और यहाँ पर एक अनदर रेसिस्टेंस कनेक्ट कर रहा हूँ, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर R2, और इसके नीचे यहाँ पर अपने को बैटरी कनेक्शन आएगी, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव विथ इंटरनल रेसिस्टेंस, और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर कनेक्शन रहेगा, दिस इज कनेक्टेड विथ योर जॉकी। तो ये हो गया सम पॉइंट एक्स जहाँ पर ये बैलेंस हो रहा है, बैलेंस मतलब डिफ्लेक्शन शोन बाय द गैल्वेनोमीटर इज 0, current passing through the galvanometer is 0. This is the resistance of your wire, that is nothing but of your AB, but I am taking it as of your ordinary. Length of your AB is equals to your L. ठीक है ना, ये पॉइंट P है जहां पर बैलेंसिंग पॉइंट बता रहा है, बेसिकली X is your balancing length इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग अपन क्या क्या यूज करते हैं बताइए बेटा जल्दी। ये तो ऐसा ड्रॉ कर लेता हूँ मैं,
एक अननोन डिस्टेंस है, यहाँ पर एक गैलोनोमीटर कनेक्ट किया हुआ होगा, सो दैट द करंट पासिंग थ्रू दिस वन इज बिकमिंग 0। तो सिंपल कर देता हूँ, यहाँ पर हो गया पॉइंट P, ठीक है ना। तो ये हो गया करंट थ्रू दिस वन, गैलोनोमीटर विल बिकम फॉर मी 0। इट इज बेस्ड ऑन व्हाट बेटा? इट इज बेस्ड ऑन Wheatstone bridge. It is based on your Wheatstone bridge. देखो टू पार्ट्स है यहाँ पर, ये मान के चलो L1 है, और ये हो गया, ये टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक 100 सेंटीमीटर्स होता है बेसिकली, ये 100 सेंटीमीटर्स होता है, तो ये बन जाएगा 100 माइनस ऑफ L1, यहाँ से लेके यहाँ तक P तक, तो यहाँ से यहाँ तक दे रखा है मेरे पास L1, ठीक है। तो अगर मैं इसको व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्म में अगर ड्रॉ करूँ, तो यहाँ पर देखो ये ऐसा एक रेसिस्टेंस बन जाएगा, और यहाँ पर एक रेसिस्टेंस बन जाएगा, और इसके नीचे यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है, और उसके बाद यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है, और बीच में आ जाएगा अपने पास गैलोनोमीटर। वैसे भी करंट थ्रू द गैलोनोमीटर 0 है, तो ये वर्क करेगा एज R1, दिस वर्क एज ऑफ योर R2, दिस इज द रेसिस्टेंस अक्रॉस योर पॉइंट A and as well as of your P, and this is the resistance across your point of your P and as well as of your D. Okay, अगर इसके अंदर R1 by R2 is equals to सेम है बेटा, 10 मिनट में फिर आप रिजॉइन कर लीजिए बेटा। So अगर मैं रेसिस्टेंस है यहाँ पर, if R1 divided by R2 is equals to resistance across your AP divided by resistance across your PB, then current through the galvanometer will become for me 0। तो इसमें हो जाएगा IG की वैल्यू 0, यानी अननोन रेसिस्टेंस जो है ना, दैट इज कैलकुलेटेड विद द फॉर्मूला R2 is equals to R1 known resistance into L2 divided by L1। So that is R2 will be equal to your, this one is your R1 into L2 value will be equal to how much beta? 100 minus of L1 divided by your L1। तो ये हो गया फॉर्मूला अपने को टू फाइंड आउट। R2 is unknown resistance, R1 is known resistance। So generally L1 plus L2 का टोटल लेंथ जो हो जाएगा that will be your 100 सेंटीमीटर्स, बट ये L1 और 100 minus L1 यानी टोटल will be equal to your 100 सेंटीमीटर्स। क्लियर है? Is it clear? P is your null point, जहां पर null deflection होता है बेसिकली। This is the condition। unknown resistance कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, known resistance into your 100 minus of your L1 divided by your L1। Clear? Is it clear? Okay, R1 is your known resistance beta, L1 is your balanced length, and here S is right now for me, R2 is nothing but for me or unknown resistance। Clear? कोई डाउट इसके अंदर? चलिए, इसके फिर प्रॉब्लम्स भी करना है बेटा। अब जैसे एंड हो जाएगा फिर ज्वाइन कर लीजिए, विल ट्राई टू डू द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस। लास्ट वन ऑन दिस वन इज योर पोटेंशियोमीटर। मैं इतना टाइम इसको इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि विल बी गेटिंग 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस वन, पोटेंशियोमीटर करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट पे, ठीक है। Potentiometer is nothing but better an ideal device which is used to find the EMF of the cell, internal resistance of the cell also, isn't it? It is an ideal device. It is an ideal device for finding EMF of cells, for finding EMF of cells, comma, internal resistance of cells, etc. इसका बेसिक सेटअप देखिए बेटा कैसा होता है। एक सेल जो ऊपर होता है उसको हम लोग प्राइमरी सर्क्यूट बोलते हैं, विच इज नॉट चेंजेबल, इट इज ऑलवेज रिमेनिंग फॉर मी कांस्टेंट, ठीक है ना। तो इसका जो ईएमएफ हो जाएगा दैट विल बी योर ई, और इसके पास नीचे एक वायर कनेक्ट होगा यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं अपन पोटेंशियोमीटर वायर। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज योर पॉइंट बी, ठीक है। और इसके नीचे अपन एक यहाँ पर एक सेकेंडरी ईएमएफ कनेक्ट करते हैं, उसके साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, and there will be a galvanometer here right now, and this one is connected to the point P। अगर ये बैलेंसिंग पॉइंट हो गया यहाँ से यहाँ तक X, और इसका ईएमएफ यहाँ पर मान के चलो दे रखा है मेरे पास हम कैपिटल E, इसको मैं ले रहा हूँ यहाँ पर B, और इसका रेजिस्टेंस ले रहा हूँ मैं यहाँ पर मान के चलिए कैपिटल R, और इसका रेजिस्टेंस ले रखा हूँ मैं स्मॉल r। तो ऊपर वाले को प्राइमरी सर्किट बोलते हैं, नीचे वाले को सेकेंडरी सर्किट बोलते हैं। What is the basic use of this one beta? It is used to find the EMF of the cell and also the internal resistance। इसके अंदर अपने को एक टर्म याद रखना है, that is nothing but about your potential gradient।
What do you mean by potential gradient? Potential gradient is represented by letter K. मतलब K is equals to your potential difference divided by unit length. Unit will be volt per meter. K is your potential difference divided by length. Unit is volt per meter. Potential difference per unit length. Okay. P is your null point beta or balancing point. So potential gradient will be equal to potential across your point A to B divided by your length. That is nothing but L0. A to B का जो length है ना, resistance out of your AB will be equal to R0. Length from your A to B will be equal to your L. ठीक है? So potential gradient will be equal to how much beta? Total potential divided by total length for this. So potential across your A and B will be equal to how much value? V is equals to your I into your R. Okay. I into your R not resistance. I की value क्या लिखोगे बेटा? I is equals to your V divided by your, that is nothing but इसका resistance कितना है मेरे पास? R not. तो ये हो गया R not plus of your R. यानी potential across your A and B will be equal to V into R divided by resistance of potentiometer wire plus resistance of the internal resistance of that battery. ये हो गया इसका relation. Clear है सभी को? Okay. तो जहां पर ये potential gradient हो जाएगा ना बेटा, this EMF whatever you're taking down E, this E will be equal to the potential across your point AP. ठीक है ना? ये जो potential है यहाँ पर, ये EMF is balancing the potential across from point A to P. That is the reason I'm writing E is equals to potential of your AP. And then E will be equal to K into your X. Potential gradient per your given length. That is nothing but X. And the maximum value of E that can be measured will be equal to how much beta? AB. ये कितना मेजर कर सकता है? मैक्सिमम AB. और E is equals to K into X. और E is equals to कहीं कहीं बुक में K into L भी लिख लेते हैं बेसिकली. तो अगर आप कंपेयर कर रहे हैं सेल्स को तो हम लोग क्या फॉर्मूला आ जाएगा? E1 by your E2 will be equal to your L1 divided by L2. एक फॉर्मूला होता है which is very important to be remembered. ठीक है? When internal resistance has been calculated by the formula, internal resistance is equals to your formula. याद है बेटा internal resistance को? Internal resistance of this battery has been calculated by the formula R is equals to your capital R into your L1 minus of your L2 divided by your L2. L1 and L2 are what beta? Balancing length without your R and as well as of your with R. Clear? Clear? Very important formula. R is equals to your R into your L1 minus L2 divided by your L2. Clear? इस पे थोड़े प्रॉब्लम्स कर लेते हैं. अपनी क्लास में मैंने आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स लिखवाया था. ठीक है बेटा. R is equals to capital R. Clear? चलो इस पे थोड़े प्रॉब्लम्स कर लेते हैं.